And can you share the YouTube link that Monica, can you put the YouTube link on the chat? It's there. Okay. Monica, when you will say, I'll start. All right, so I'm starting now. A very warm good afternoon to the speaker of the day and the audience present here. It's an immense pleasure to welcome you all here today and kickstart the webinar on careers in HR. There literally has never been a moment to be in the business of people. I know there was a time when HR wanted that seat at the table and were busy trying to prove their value to business, hoping colleagues in finance, marketing, and technology would see them as their contemporaries. And although there were a few standout CEOs like Jack Welch, General Electric CEO, who spoke about the virtues of HR, the overwhelming majority of business leaders did not know what HR did or didn't believe it was of any value to them. They were thinking, can't we do without HR? The world has entered what's been called the fourth industrial revolution, but this one is not about the future of machines. It's about future of human beings relationship to the machines. It's about getting work done through the merger of biological intelligence and artificial intelligence, taking full advantage of technology while unleashing the potential of all that makes us uniquely human. To deliberate on the careers in HR today, we have the privilege of getting to interact with Mr. Saud Usmani. He is Regional Head HR, Central and East UP at Hindustan Times. He is widely acclaimed HR professional with more than a decade of rich industry experience. He is an alumna of Tata Institute of Social Sciences. He has experience as Assistant Human Resource Manager at Bharat Petroleum Corporation Limited, Senior HR Manager and DGM, CSR at Tata Motors. He has hands-on experience on various HR functions such as talent acquisition, learning and development, performance management, employee engagement, employee relations, CSR, skill development, manpower planning, organizational communication, and the list is unending. He is known for powerful public speaking skills and the ability to design and deliver behavioral training programs for all the employees levels. He is a certified trainer from Dale Carnegie Institute at Bradford College, UK. Sir, we welcome you to the webinar. The floor is all yours. Thank you, ma'am. Thank you so much for this kind introduction. And it's a privilege to be back and speaking with the students of IILM once again. And the IILM faculty and the leadership team of IILM Lucknow has been very generous and very kind to me, to have considered me time and again worthy enough to be considered to talk to their students. So thank you very much, IILM, once again. And I think this must be continuously fourth or fifth year that I'm speaking to the young batch of the students of IILM. And every time that I come here and I speak with you people, the quality of questions and the quality of students goes on getting better and better. So I am looking forward to some really good quality interaction this year as well. And let's see how much I can justify your expectations and meet your expectations. So the topic for the day is careers in HR. And because it is such a fluid topic and such a generic topic, so I thought that there is no need of making it unnecessarily too objective by adding a presentation or a structure to it. I thought that this is more of a conversation which you would like to have with me, and you would like to
hear what I have to say about careers in HR. So जो बातें दिल से करनी है उनके लिए presentation बना के एक बिला वजह की दीवार उसमें लाने की जरूरत नहीं है. That is why I thought let's do it more impromptu and more casual. So I will take up a lot of questions which will come from the students. So we will divide this session into three parts. The first part is certain things which are on top of my mind, which I will speak of right now. And then the second part will be I can leave some space for Dr. Vibhuti to ask a few questions which she would have had in her mind, or as a faculty she would be representing most of you and your doubts. And then the third part we can leave for your direct questions, anything which has been missed by me or has not been covered in the questions of Dr. Vibhuti. So those can be covered in the last 5, 10, 15 minutes that we have towards the end. So we are starting off at 7 minutes past 1, and we end to wind this up by 1:50. So we have around 40 good minutes for ourselves. So let's start. So careers in HR, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं. मैं ऐसा करता हूं, I'll take you through my own journey, how I started in HR, what has been my journey. So I was a graduation student in Lucknow University. I did my graduation from Christian College in the Faculty of Commerce. So that is my educational background before MBA. So that is the point where none of us know which side do we want to go. So to start off, let me tell you that till class 12th, I was still a maths and physics and chemistry student. Like everyone in India wants to be, I also wanted to be an engineer. I didn't want to be an engineer. I was told that I should become an engineer. So, but then I realized pretty early that that is not something I will enjoy. And I was fortunate enough that my parents also appreciated this decision and acknowledged it. And so I dropped science after class 12 and moved into the commerce stream during my graduation. There was no particular agenda behind taking commerce as a subject in graduation, but the idea was that this is one field which will open a lot of avenues. So I can experiment into the chartered accountancy, I can experiment into the company secretarialship, I can experiment into the MBA side, I can experiment into various fields. So non-science, non-maths side. So that was the only reason why I chose BCom. And during the 3 years of BCom, I did experiment with chartered accountancy. I did appear for CA exams, and also realized in the first attempt that this is something I hate even more than engineering. So I dropped it immediately. Then by the second year, I realized that out of all the commerce subjects which I was studying, I was enjoying the management subjects the most. And in fact, even in the CA exams, I was scoring very well in the management subjects, and I was scoring pathetically in the account subjects. So it was a clear indication that management is something which I'm enjoying. So a lot of you would not know, but the faculty here knows that my father is a professor of management. So he is a very, very senior faculty of management. He was the principal of ICCMRT, which is one of the UP government institutions here in Lucknow. So he and I came together on this decision that I must give it a try to go into the management field. And since he himself is a professor of HR and of organizational development, so since childhood, I was slightly exposed to the concepts of HR at home. So his training programs, the presentations which he would make, the slides which he would make, I had some exposure to this side of management. So this was something I was attracted to, and I gave it a try to appear for the TIS entrance exam. So luckily in the first shot, it got cleared, and I went to TIS in the year of 2007.
So as most of you would know, TIS is a hardcore HR institute. There is nothing else which they teach there in the area of management. Of course, there are a lot of other subjects which they do, but that's all in the area of social service, social science, community development. But in the area of HR, that's the only subject which they teach, which is in the area of management, HR is the only thing which they teach. So I went there, and the 2 years course was completely designed for HR, and we were not taught any marketing or accountancy or anything like that. So it was pure HR for 2 years. So almost even before I had gone to TIS, it was decided that mera career nahi banega. So I would say that I was not in your shoes when you are at this juncture, because you are still open to a choice. You still have a choice कि मैं marketing लूं, कि मैं HR लूं, कि मैं finance लूं, कि मैं sales में जाऊं. वो choice मेरे पास है, हम लोगों के पास नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे institute में पढ़ रहा था जहां सिर्फ HR ही पढ़ाया जाता था. So, but there is one thing which is very special to the college where I went, that is TIS. And let me share that. TIS has this provision of something called as a field work. So जैसे आप लोगों का समर इंटर्नशिप होता है, सब MBA कॉलेजेस में एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो 2 सालों में जो बीच का गैप होता है उसमें हम लोग 2 महीने के लिए किसी कंपनी में जाके कुछ काम करते हैं. तो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएगा, कोई हिंदुस्तान टाइम्स में जाएगा, कोई टाटा मोटर्स में जाएगा, कोई कोलगेट में चला जाएगा, कोई ICICI में जाएगा, कोई एक्सिस बैंक में जाएगा, और वही एक एक्सपीरियंस लेके आप बाहर आ जाते हैं. टिस में हर सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर्स में 4 फील्ड वर्क होते हैं और एक समर इंटर्नशिप होती है. सो विच मीन्स दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ऑफ द एंटायर 2 years that we are there, every semester we are assigned one company, and that company we have to go and work for 2 days in a week. Monday and Tuesday there are no classes, and the students are supposed to go to a company and work there and then come back. So the college ensures that this company which they allocate to us, they ensure that in the 4 semesters we get a flavor of 4 different industries at least. So my first fieldwork was with Coca-Cola, which is an FMCG company, as you know. Then my second fieldwork was with Tata AIG, which was an insurance company, no longer existing now. Then the summer internship was with Voltas, which is a consumer durables company. The third fieldwork was with First Source, which is a BPO, which was a BPO of ICICI Bank. And then the last one was in HSBC Bank. So by the time I had graduated from TIS, I had seen the HR department of an FMCG company, of a bank, of a consumer durables company, of a call center, and of the fourth one, the insurance organization. So this is what happens what happened with all of us who were studying there. So by the time we graduated, all of us had idea of at least HR in 4 different industries, and we like you would be having a choice के मैं मार्केटिंग में जाऊं या अकाउंट्स में जाऊं या फाइनेंस में जाऊं. हम लोग उस समय ये डिसीजन लिया करते थे कि which industry would I like to choose for myself for HR. So HR तो करना ही है, ये तो तय हो चुका था, बट इंडस्ट्री की चॉइस प्लेसमेंट के टाइम हम लोगों के पास थी. So we used to pick and choose के I would like to go for this company, I would like to go for this company. But this was happening before 2009. मैं ग्रेजुएट हुआ 2009, और 2009 एक वो साल था जो कि कुछ आप लोगों के साल की तरह है. आप लोगों को पैंडेमिक ने मारा है, हम लोगों को रिसेशन ने मारा था. सो वो साल वो था जब JP मॉर्गन और बड़े बड़े बैंक सब एकदम डूब रहे थे, और सत्यम स्कैंडल और बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी, एंड द market was going down into a big time recession. So the jobs exhausted. So हमारे सीनियर्स से हम लोग ऐसा सुनते थे कि जब आप जॉब निकलते हो, यहाँ से टिस्प से निकलते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि मेरे पास नेस्ले का पैकेज है 20 लाख रुपए का, और मेरे पास ICICI बैंक है 18 लाख का, और मेरे पास अर्न्स्ट एंड यंग कंसल्टिंग है 24 लाख की. अब मैं सोच रहा हूँ मैं किस पे जाऊंगा. हम लोगों के साथ ऐसा हो गया कि भाई जो मिला वो वक्त पकड़ लो और चुपचाप अभी 1-1.5 साल तक चुपचाप बैठे रहो, अभी कुछ नहीं मिलने वाला है. So I got placed into a PSU,
and that PSU was Bharat Petroleum. So Bharat Petroleum was my first job, and I started off as a management trainee, and then they confirm you into the assistant manager position. So I left the company after 2.5 to 3 years, and in this time, the first job which I did at Bharat Petroleum, that job was called a business HR job. So I'll come to all these a little in detail. So I did a job called business HR job. So as you know, Bharat Petroleum के पेट्रोल पंप्स तो आप सबने देखे ही हैं सड़क के ऊपर. उसके अलावा आप जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम की गैस सिलेंडर भी कुछ लोगों के घर में आते होंगे. कुछ के घर में इंडेन का आता होगा, कुछ के घर में भारत गैस का आता होगा. तो जो भारत गैस होता है, दैट इज फ्रॉम भारत पेट्रोलियम. तो BPCL has three main businesses. One is the petrol and diesel, the other is LPG, and the third one is lubricants. तो ये उनके 3 बिजनेस थे, और हर बिजनेस का जो टीम थी, उस टीम के लिए एक डेडिकेटेड HR फंक्शन होता है. So we were called the embedded HR, but it is actually a business partner HR role which we were doing at that time. So I got the first job as business HR for the LPG division. So that was where I spent almost the first 2 years of my HR life. And I must tell all of you that the first job which you do after campus and the first boss which you get after campus, these two things to a great extent shape the way you are going to be for the rest of your life. So in your professional life. So just like your parents have a huge impact on your personality in your personal life, similarly, your first boss and your first job has a huge impact on the way you nurture yourself and you groom yourself in your career. So I was lucky to be in a place, in a company where HR was considered with great repute, with great respect. And the company was a cash-rich company. So there was a lot of money to spend on HR initiatives. There was a lot of money to spend on training programs and all that. So ये उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट बाद की कंपनियों में समझ में आया कि वो सरकार में जो इतना पैसा होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि जब यहाँ पर पता चलता है कि बजट नहीं है ट्रेनिंग का, तो समझ में आता है अच्छा वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. सो उस वक्त तो उसकी वैल्यू नहीं पता थी, बट नाउ आई रियलाइज दैट फॉर एनी HR फंक्शन टू सक्सीड, इट मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग ऑफ द लीडरशिप. And if the leaders think, if the management thinks that HR is a critical function in their organization, and whatever is going to be the future of the company, HR is going to play a key role in that. So then HR itself enjoys a great seat in the journey. But there could be organizations where still HR is not enjoying that kind of seat or that kind of and generally I would say किसी भी matured organization में अब ऐसा नहीं है, but हाँ अभी भी कुछ देसी organizations होंगे, ऐसे definitely होंगे. For example, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे उनके बारे में पता है कि वहां पे ऐसा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक नाम ले रहा हूँ कि लेट अस से कि कानपुर बेस्ड कोई पान मसाले का ब्रांड है, ठीक है. अब एज अ कंपनी, एज अ टर्नओवर वाइज, एज अ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, दैट कंपनी माइट बी एक्चुअली बिगर देन हिंदुस्तान टाइम्स, but in terms of culture, in terms of practices and policies, they would be very primitive. It would still be a very family run kind of business. आज इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसको निकाल दो and all that. So there would be organizations where HR is still not enjoying that kind of a seat. But thankfully, I have been lucky in that way that मुझे तीनों organizations ऐसे मिले जहां पर HR का अच्छा portfolio था. So starting off with BPCL, I was doing the business HR role for the first 2 years in my life. And then I got a transfer within the company, and I was transferred to a place called BPLC. BPLC is Bharat Petroleum Learning Center, and it is their in-house university.
It is their in-house management center where they have a lot of training programs. So I got shifted to BPLC. It was a fantastic experience at BPLC. मैंने कहाँ पर क्या काम किया मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी बताने वाला हूँ. So then after 3 years, I decided to move on, and my decision was based on my personal reasons. I wanted to come back to Lucknow. So there was an opening in Tata Motors plant at Lucknow. और मैंने अप्लाई किया, इत्तेफाक से हो गया मेरा वहां पर. So I came to Lucknow and I joined Tata Motors Lucknow in the year 2011 December. So from 2011 December till 2019, for 8 years, almost 7.5, 8 years, I worked for Bharat Petroleum. In these 8 years, I looked after three main portfolios. The first one was employee engagement. The second one was recruitment. And then the third one was CSR, corporate social responsibility. So I looked after three portfolios in Tata Motors in 8 years' time. And then I decided to move on and I came to Hindustan Times. At Hindustan Times, I joined as the regional HR head for Central and East UP. So Hindustan Times has some regions. So there is a North region, which is headquartered in Delhi, and then a West, which is in Bombay. And then there is a West UP, which is based in Meerut. And then the East UP, which is in Lucknow. And then Bihar, Jharkhand, and Calcutta. So these are the regions. Out of this, Central East UP, which is our region, is the biggest region for the Hindi newspaper, which is Hindustan. And it is the cash cow of the company. So it's one of the prime locations for Hindustan as a newspaper brand. So this is the role which I took over in the year 2019, March. So just around 2 weeks ago, I completed 2 years in this role of regional HR head. So for the first time, now let me tell you what all jobs have I done in these, what all roles have I done in these jobs that I told you. So business HR in LPG of Bharat Petroleum. So straight out of campus, आप ही लोगों की उम्र का मैं था उस वक्त, और उस वक्त जो मुझे पहला काम, पहला असाइनमेंट जो मुझको मेरे बॉस ने दिया, वो असाइनमेंट था जो एलपीजी डिवीजन है, जो एलपीजी की टीम है, उसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए एक एमडीपी प्रोग्राम डिजाइन और कंडक्ट करवाना with any of the top institutes that I would choose. So that was a lot of power and a lot of decision making for the first assignment for someone of 23, 24 years old, because you are designing an MDP program for people who are double your age, who have spent as many years as you are old in your life, they have spent in the Bharat Petroleum. So they are very senior people, और उनके लिए कौन उनको पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा और कहाँ पढ़ाएगा, ये सारा डिसीजन आपके पास है. सो आई डिड नॉट नो, एंड आपको भी, आपके साथ भी यही होगा, जब आप असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि ये करने कैसे हैं. So you will have to find your ways into these assignments in the initial days of your life. So I went to various institutes. I went to IIM Lucknow because मैं लखनऊ का था, तो IIM Lucknow में मेरे अच्छे connections थे. तो IIM Lucknow पहुंचा, टिस गया, टिस के फैकल्टी से बात करी, और भी एक आध इंस्टीट्यूट्स मैंने एक्सप्लोर किया, और फाइनली मैंने IIM Lucknow में एक MDP प्रोग्राम के लिए अप्रोच किया उनको. वहां के प्रोफेसर्स ने वो प्रोग्राम डिजाइन किया, मैंने अपने LPG के लीडर्स के साथ वो डिस्कस किया, उन्होंने कुछ चेंजेस बताए, मैंने वापस प्रोफेसर्स को बताया, फिर एक नया प्रोग्राम बना. इस तरह से उसके बाद फिर उसका एक शेड्यूल बनाया गया कि कितने लोगों को ट्रेन करना है, कितने महीने में ट्रेनिंग होगी, एंड ऑल दैट हैपेंड. दिस वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट इन एलपीजी. सो होता क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब, यू डू नॉट नो पीपल इन द कंपनी आल्सो. सो व्हेन द फर्स्ट असाइनमेंट कम्स, जैसे कि ये असाइनमेंट मैं आपको ये इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ बिकॉज this is how you start learning how to deal with people in your organization. So by the time I was talking to these leaders कि आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है, their teams were looking at me कि अच्छा ये कोई लड़का है जो आके मेरे बॉस से बात करता है, तो कोई इंपॉर्टेंट होगा, कोई नया आया है बट होगा इंपॉर्टेंट, बॉस से डिस्कशन कर रहा है. So you build a rapport about yourself, एक आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है, आपका
जिस बॉस से आपने बात करी वो अपनी टीम में दो बातें बोल सकता है, अरे वो नया लड़का आया है एचआर में, अभी आया था, ये बोल रहा था, लग तो रहा है बड़ा स्मार्ट, या तो वो ये बोलेगा, या वो बोलेगा एक और घोंचू आ गया एचआर में, अभी तक कोई कम थे, एक और घोंचू उन्होंने ले लिया। सो वो आप कैसी अपनी रेपुटेशन बिल्ड करते हैं, कैसी अपनी इमेज बिल्ड करते हैं, वो सारी चीजें डे वन से आपको लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो बनना शुरू हो जाती हैं। The second work which I did was at LPG was their manpower planning. So there were two parts of the manpower team. One was the plant team, जो कि सिलेंडर के अंदर गैस भरती है, और the other is the sales team, जो कि आपके घर पे से जो सिलेंडर आता है वो तो किसी एजेंसी के थ्रू आता है, बट वो एजेंसी किसी सेल्स ऑफिसर के कंट्रोल में होती है। तो वो सेल्स ऑफिसर्स होते हैं जो कुछ एजेंसी को कंट्रोल करते हैं, और क्लाइंट्स जितने हम जैसे कस्टमर्स होते हैं वो उनके अंडर आते हैं। तो दो लोग होते हैं, एक प्लांट के लोग और एक सेल्स के लोग। अब कंपनी ने ये कहा कि आप सब डिसाइड करिए कि कितने लोग होने चाहिए टोटल, और क्या एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पीपल ठीक है या ज्यादा है या कम है, वो आपको बताना है। तो अब ये कैसे बताना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। तो पहला चीज जो मुझे बॉस ने बताया, मेरे बॉस ने बताया कि आप जाकर सारे प्लांट्स को स्टडी कीजिए और ये देखिए कि एक प्लांट में कितने लोग काम करते हैं और किन पोजीशंस पे काम करते हैं। और उसके बाद पहले ये समझिए कि उस हर प्लांट अलग अलग साइज का होता है। तो क्या एक फॉर्मूला अराइव किया जा सकता है कि किस साइज के प्लांट पे क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। तो मैंने प्लांट विजिट्स करना शुरू किए, तो पता चला कि 80% डिजाइन एक प्लांट का कॉमन होता है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो कुछ प्लांट में होती हैं, कुछ प्लांट में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट के अंदर ट्रेन आती है जिसके अंदर गैस भरी होती है, वो पूरी की पूरी ट्रेन को की गैस को डाउनलोड किया जाता है, और किसी प्लांट में वो फैसिलिटी नहीं होती है। किसी प्लांट में पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है, किसी प्लांट में ट्रक के थ्रू गैस आती है। तो कोई बहुत बड़े प्लांट होते हैं, कोई मीडियम साइज के प्लांट होते हैं, कोई छोटे प्लांट होते हैं। अच्छा, एक बार जब गैस आ गई तो उस गैस को सिलेंडर में भरने का ऑपरेशन या तो एक मशीन पे हो सकता है, या दो मशीन पे, या तीन मशीन पे। एक मशीन पे अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो इतने लोग लगते हैं, अगर मैकेनिकल है तो इतने लोग लगते हैं। सो चीजें समझ में आनी शुरू हुई। अच्छा, इसके पीछे कुछ मैथ्स बनाई जा सकती है, टाइम लगेगा लेकिन वो मैथ्स बन सकती है। तो फिर आप जैसे जैसे घूमते हो और आप स्टडी करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, यू स्टार्ट गेनिंग सम इनसाइट्स। एंड माइंड यू, दीज आर नॉट एचआर इनसाइट्स। ये आपको किसी भी एचआर की किताब में नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है, और किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता है। चाहे आप आईआईएम में पढ़ लें, चाहे आप आईआईएलएम में पढ़ लें, कहीं पे भी आपको ये बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी। दीज आर ऑल कॉमन सेंस थिंग्स। सो यू, what I'm trying to tell here is that uh, a lot of things which you are learning right now in the books, they might remain in the books, and what you are actually going to do, or what you are actually are going to be expected to deliver in the organizations, might be something very common sense based, something very very basic, जो कि शायद एक 10th क्लास का लड़का भी वैसे ही अप्रोच करेगा जैसे आप अप्रोच कर रहे हो। The only difference is, to be eligible to be in that position, you need to read these books. वहां पर शायद इनका इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए है वहां तक पहुंचने के लिए। इसलिए इस वक्त आप ये सब पढ़ाई कर रहे हैं। बट ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था जो मैंने बीपीसीएल में लिया। उसके बाद फिर मैं ये काम करके चला गया लर्निंग सेंटर, बीपी भारत पेट्रोलियम लर्निंग सेंटर। वहां पर भी इस तरह के एमडीपी प्रोग्राम्स और ये सब होते थे, बट वो ज्यादातर हम लोग कंसल्टेंट्स के साथ करते थे। तो केपीएमजी को बुलाना, मैकेंजी को बुलाना, अर्नस्ट एंड यंग। सो उसका एक फ्लेवर मिला कि ये कंसल्टेंट्स कैसे काम करते हैं, इनके काम में और हम लोगों के काम में क्या फर्क होता है। वो लोग काफी थ्योरेटिकल काम करते हैं, काफी बुकिश काम होता है उनका। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि ये जो किताब की नॉलेज है ये पीछे रह जाती है, उनके यहाँ नहीं रह जाती। कंसल्टेंट्स आर heavily backed on theories and books. तो वो काफी किताबों की लर्निंग अपने साथ लेकर आते हैं और हम लोगों जैसी कंपनीज में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो काम सीखा, बट वो बहुत ही कम देर रहा, मैं शायद 7 या 8 महीने। एंड देन आई केम टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मुझको सबसे पहले एम्प्लॉय एंगेजमेंट करने को बोला गया,
और एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस चिड़िया का नाम है मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर समझ में आया, पढ़ा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है। जब ज्यादातर लोगों से समझने की कोशिश की, टाटा मोटर्स के ही लोगों से जब समझने की कोशिश की, तो काफी लोगों ने बताया कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि बर्थडे सेलिब्रेशन कराना, पिकनिक पे ले जाना, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए क्विज करा दो, ये करा दो। लेकिन जब कंसल्टेंट्स के साथ बैठा, उनसे समझने की कोशिश की कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है, तब पता चला कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब हम लोगों की कंपनी या ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एकदम गलत समझ रहे हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि आपका एम्प्लॉय अपने रोल में कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा है, उसको वो काम करके कितना सेटिस्फैक्शन या कितना प्राइड महसूस होता है, उसको अपने बॉस के साथ काम करने में कितना मजा आता है, क्या वो बॉस की शक्ल देख के रोज परेशान होता है या खुश होता है, उसको अपनी टीम के ऊपर कितना भरोसा महसूस होता है, क्या उसको लगता है उसके आसपास के लोग क्वालिटी काम करने वाले लोग हैं, या उसको लगता है उसके आसपास के लोग काम चलाऊ काम करने वाले लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें, एम्प्लॉय एंगेजमेंट सिर्फ रंगोली बनाना या गुब्बारे टांगने का काम नहीं है। तो जब ये पता चला तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट को करने में मजा आने लगा। पहले मुझे लगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट में सिर्फ मुझे गुब्बारे टांगने को बोला जाएगा, बट देन आई रियलाइज इट इज मच मोर देन दैट। So that is how I learned this new task of employee engagement. फिर मैं पहुंचा रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत इंतजार था, और मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन मुझे रिक्रूटमेंट करने को मिलेगा उस दिन मुझे बहुत मजा आएगा, और यही हुआ। अभी तक का जो सबसे ज्यादा इंजॉयबल फेज मैंने देखा वो शायद मैंने रिक्रूटमेंट में देखा, और उसका रीजन ये है कि रिक्रूटमेंट में, टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट 80% जो मैं रिक्रूटमेंट करता था वो कैंपस हायरिंग होती थी। और कैंपस हायरिंग में मैं एमबीए कैंपसेस, इंजीनियरिंग कैंपसेस और डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक्स, इन 3 कैंपसेस में मैं जाता था। और लैटरल हायरिंग भी करता था, एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग भी करता था। लेकिन एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग क्या होती है कि एक्सपीरियंस लोग एक जॉब में परेशान होते हैं और वहां से निकल के वो दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, या एक जगह पर उनको 40,000 रुपए मिल रहा है, वो 50 या 60,000 की जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए बस इतनी सी बात होती है। लेकिन कैंपस हायरिंग में किसी को पहला जॉब मिल रहा होता है, और वो एक स्टूडेंट लाइफ से एक अडल्ट लाइफ में वो एक एंट्री हो रही होती है, वो एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जो कैंपस जॉब होता है। तो वहां जब मैंने कैंपसेस जाना शुरू किया, स्पेशली इंजीनियरिंग कैंपस जहां बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप लोगों से भी शायद छोटे ही होते हैं, तो उनको जब जॉब्स मिलना स्टार्ट हुए तो आईआईटीज में, एनआईटीज में, थापर इंस्टीट्यूट और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और इलाहाबाद एनआईटी और भोपाल एनआईटी और आईआईटी कानपुर और ये सब, तो जब वहां गया और वहां पर लोगों को जॉब्स दी, और वो बच्चे जॉब ऑफर लेते ही रोने लगते थे या एकदम एक दूसरे को उछालने लगते थे और एक दूसरे के कपड़े उपड़े एकदम नोच देते थे वो सब, तो दैट वाज समथिंग व्हिच गेव मी अ ग्रेट हाई कि अरे कितना बढ़िया काम है ये कि मैं किसी को लाइफ की पहली जॉब दे रहा हूँ, एंड दिस इज सच अ वंडरफुल अमेजिंग फीलिंग। सो I used to be reminded of the day when I got my first job. तो वो खुशियां वापस देखने को मिलती थी बच्चों में जब वो लोग सेलिब्रेट करते थे. So I was really enjoying that particular phase. And then at that time I decided that I wanted to look into the concept of campus hiring into more detail. So I started doing some research work, and that research work was in the field of campus hiring, and I focused it on something called as impression management. तो एक जॉब इंटरव्यू जो 15 मिनट चलता है या 20 मिनट चलता है, उसमें क्या ऐसा डिसाइड हम लोग कर लेते हैं या हम देख लेते हैं जिसपे हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि इसकी जॉब टाटा मोटर्स में लगेगी, इसकी नहीं लगेगी. सो आई केम अप विद दिस hypothesis that perhaps it is nothing but an impression that we create in our mind कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा खराब है, जबकि हो सकता है वो इंप्रेशन सही हो या हो सकता है वो गलत हो. बट ये इंप्रेशन बनता कैसे है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये इंप्रेशन बनाते हैं कि ये अच्छा है और ये खराब है. तो मैं इस रिसर्च के अंदर घुस गया और मैं ये पढ़ने लगा कि बच्चे कैसे अपने इंप्रेशन को क्रिएट करते हैं. कुछ लोग जानबूझ के और कुछ लोग अनजाने में, बट एवरीवन इज ऑलवेज क्रिएटिंग एन इंप्रेशन. सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट इंप्रेशन, मैं उसके ऊपर रिसर्च करने लगा. तो वो एक अलग से मैंने काम किया, दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय जॉब, बट
something which I was, because I was enjoying in my job, so मैंने वो काम शुरू किया. फिर मुझको कंपनी ने बोला कि अब आपका प्रमोशन हो रहा है, आप डीजीएम बन रहे हैं, और एचआर में डीजीएम लेवल पे अभी कोई पोजीशन नहीं है, so you need to take up something else. So I was given a job in CSR. Now CSR is generally not a part of HR, एकदम अलग फील्ड है, but in most of the companies it reports to HR head, so it is an extension of the HR in most of the companies. So I thought कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो मैंने 2 साल CSR का काम किया टाटा मोटर्स में. अच्छा काम था, बट मेरे लिए नहीं था. So I did not find it really something जिसके लिए सुबह में इंतजार करूं कि आज मैं क्या करने वाला हूं. तो ऐसा कुछ मजा नहीं आया मुझे. So उस काम में मैं बोर हो गया और मैंने फिर अपना जॉब चेंज किया और मैं हिंदुस्तान टाइम्स आ गया. अब पहली बार मैं एक HR हेड की पोजीशन पर था, और बहुत से ऐसे काम जो मैं पहले कर चुका था, अब वो लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर, या बहुत से ऐसे काम जो मैंने कभी नहीं भी किए थे, अब मैं वो भी कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल लीगल. अब लीगल केसेस होते हैं कंपनी में, एम्प्लॉइज लीगल केसेस करते हैं जिनको निकालती है कंपनी, ये सारी चीजें. तो वो बहुत से ऐसी चीजें हैं जहां जो मैंने ना बीपीसीएल में कभी देखी थी, ना टाटा मोटर्स में कभी देखी थी, बट पहली बार अब पता चला कि ये भी आपको संभालना है. एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के लिए होटल बुक हो रहे हैं, गाड़ियां बुक हो रही हैं, आपकी बिल्डिंग में ये छज्जा गिर गया, ये इसकी मरम्मत होनी है, वो पाइप फट गया, ये भी. और आप लोगों को हंसी आएगी, यू मे बी सरप्राइज, बट नाली चौक हो गई है, नाली साफ कराना, इवन दैट केम अंडर माय पोर्टफोलियो. सो this was the first time I was into an HR and admin head kind of role. So अच्छी बात ये थी कि मुझे हाथ से खुद कुछ नहीं करना है, but I had to oversee people who were doing these jobs, and some of these jobs were jobs which I had never done before. For example, जो बंदा रिक्रूटमेंट करता है मेरी टीम में, उसको तो मैं बहुत आसानी से गाइड कर सकता हूँ कि भाई ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मैं हायरिंग कर चुका हूँ. बट जो बंदा लीगल केसेस देखता है, उसको मैं कैसे गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही कभी लीगल केसेस नहीं देखे. और आप कुछ सालों बाद आप अपने आप को ऐसे पोजीशन में पाएंगे जब आप भी किसी के मैनेजर होंगे, और आप शायद ऐसी चीजों को ओवरसी कर रहे होंगे जो खुद आपने कभी नहीं करी होंगी. तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए, ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए जो अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं और आप उस एरिया के एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको भी उनके लेवल तक आना पड़ता है. तो फिर आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और आपको समझना होता है कि अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. जब वो बोलता है, वो आके बताएगा आपको कि सर सीपी केस था, सीपी केस में वो IT2 में लगा हुआ था, वहां जज साहब ने सुना, उन्होंने पिटीशन डाल दी. अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि सीपी केस होता क्या है, या आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये IT2 जो बोल रहा है, ये IT2 क्या होता है. तो फिर धीरे धीरे यू गेट टू लर्न कि वो सीपी केस से उसका मतलब क्या था, या वेज बोर्ड जब वो कह रहा है, या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जब वो बात कर रहा है. तो आपको ये भी नहीं पता कि लेबर कोर्ट में पहले जाते हैं, कि लेबर ऑफिस में पहले जाते हैं, कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पहले जाते हैं. तो ये सारी चीजें एकदम से आप ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं कि आपको सीखनी पड़ती है, और बहुत तेजी से सीखनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक आप बड़ा कुछ नहीं जॉब कर रहे हैं. टाटा मोटर्स में हायरिंग कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को नौकरी बांटना आपका काम है. बड़ा आपको एक हाई महसूस होता है कि क्या कमाल की जॉब है, मैं जाता हूँ और लोगों को नौकरी बांटता हूँ, लोग आंसू बहा के रोते हैं, मजा आ गया, वाह 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 वाह. लेकिन आपको नहीं पता कि HR का एक ये गंदा एंगल भी है कि आपको जाके वकीलों के साथ बैठना है, और आपको केसेस लड़ने हैं, और आपको एम्प्लॉय के जो शिकायतें हैं उनके आप एम्प्लॉय अपने एक्स एम्प्लॉय के सामने कोर्ट में सामने सामने बैठ के डिस्प्यूट लड़ रहे हैं. वो कह रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, आप कह रहे हैं नहीं हमने ऐसा नहीं किया. ये सारी चीजें भी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब जो चीज मैंने पहली बार देखी इस जॉब में, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, दैट वाज जॉब लॉस. सो फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक I realized that HR also has to do the painful part of sending people home. तो एक तरफ वो एक्सट्रीम था कि आप एक 22-23 साल के लड़के को उसकी लाइफ की पहली जॉब दे रहे हो, और दूसरी तरफ मैंने वो एक्सट्रीम देखा कि आप एक 55 साल के, 52 साल के, 56 साल के, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज के, अपनी मदर की एज के लेडीज को आप ये बोल रहे हैं कि
कल से आपको जॉब पे नहीं आना है और आपका सफर यहीं पे खत्म, जबकि आपको मालूम है कि अब शायद इनको दूसरा जॉब नहीं मिल पाएगा। तो वो भी एचआर का पार्ट है। तो जो मैं आप लोगों को अब बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, वो ये है कि जब आप करियर्स इन एचआर की बात करते हैं, तो करियर्स इन एचआर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी ब्रॉड। इसमें इतने फ्लेवर्स हैं और इसमें इतने रंग हैं कि आप को वो सारे रंग देखने में शायद कम से कम कुछ नहीं तो 15 साल लग जाएंगे। अभी भी एचआर के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस अभी तक नहीं देखा, जबकि मैं टाटा मोटर्स में 8 साल रहा, लेकिन मैंने वर्कर्स को डील नहीं किया, मैंने सिर्फ व्हाइट कॉलर को डील किया। मैंने एचआर का जो ऑपरेशंस का पार्ट होता है, सैलरीज, पेरोल, पॉलिसीज, इनके ऊपर कभी काम नहीं किया। तो आज 12-13 साल बाद भी एचआर के इतनी चीजें देखने के बावजूद भी I am not a complete HR man, and there is still at least 3 or 4 transfers or role changes which I will have to do in order to have seen all the aspects of HR. So उसमें से एक अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है. I am moving out of this current role of regional HR, and next week onwards I am taking a new role, which is in the area of HR operations, and it is a corporate role. So it will no longer be based in UP or Lucknow. I'll be overseeing the HR operations जो अभी मैं आपको गिना रहा था for the entire HT as a organization. So that will tick one of the boxes which are still left, but still there are 3-4 boxes which will be left after that. For example, I told you IR is a big box which I have never ticked. तो HR के करियर्स जो हैं वो शुरू कहीं से भी हो सकते हैं। उसमें घूम फिर के अगर आप देखिए तो 2 तरह के करियर्स होंगे, या तो आप जनरलिस्ट एचआर होंगे और या फिर आप स्पेशलिस्ट एचआर होंगे। स्पेशलिस्ट एचआर की बात पहले करते हैं। स्पेशलिस्ट एचआर वो होता है जो एचआर के किसी एक डोमेन या किसी एक फंक्शन का काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ओडी कर रहे हैं, आप एचआर एमआईएस पे काम कर रहे हैं, या आप कल्चर पे काम कर रहे हैं, आप इंगेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर डोमेन के स्पेशलिस्ट बन गए हैं। और मैंने अपने 8 साल में ज्यादातर काम स्पेशलिस्ट वाले ही किए हैं, कभी एंगेजमेंट, कभी रिक्रूटमेंट, कभी सीएसआर, कभी एलएनडी। सिर्फ जो पहला रोल था एलपीजी में 1.5 साल का, वहां पर मैं जर्नलिस्ट एचआर था, और अब जब मैं रीजनल एचआर हेड बना था, तब मैं एक जर्नलिस्ट एचआर का काम कर रहा था, बट ज्यादातर मैंने स्पेशलिस्ट एचआर वाले ही काम किए। तो आपको भी इस तरह से 2 ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या तो आप में से कुछ लोगों को जर्नलिस्ट एचआर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप में से कुछ लोगों को स्पेशलिस्ट एचआर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें से कौन सा बेटर है, इसका कोई आंसर नहीं है। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली स्पीकिंग, मैं रीजनल एचआर के जॉब को या एक जर्नलिस्ट एचआर के जॉब को उतना ही एंजॉय करता हूं जितना मैं ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट को करता हूं, जबकि ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट मेरे दिल के ज्यादा करीब है। लेकिन इवन रीजनल एचआर हेड के जॉब में मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मुझको नालियों की सफाई भी देखनी है और मुझको लीगल केसेस भी देखना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब विच आई हैप्पीली डू। So these are the 2 main distinctions in the kind of roles which you will get to see. But ये सारी बातें एक तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एचआर में जॉब शुरू कैसे की जाए। तो एचआर की जॉब जो शुरू होगी आपकी, वो क्या होगी वो आपके हाथ में नहीं है। कंपनी जो आपको एचआर के जॉब के लिए लेगी, वो आपको जर्नलिस्ट प्रोफाइल के लिए भी ले सकती है, वो आपको स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के लिए भी ले सकती है। उसमें आपका चॉइस नहीं पूछा जाएगा कि आप एलएनडी में जाना चाहेंगे या आप रिक्रूटमेंट में जाना चाहेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बट दोनों ही इक्वली अच्छे हैं। आप पहले स्पेशलिस्ट वाले काम करके फिर जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या आप पहले जर्नलिस्ट वाले काम करके फिर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या आप कभी जर्नलिस्ट कभी स्पेशलिस्ट में स्विच कर सकते हैं मेरी तरह। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि सर मुझको जर्नलिस्ट नहीं दिया, मुझको स्पेशलिस्ट दे दिया, सर मुझे स्पेशलिस्ट नहीं दिया, मुझे जर्नलिस्ट दे दिया। ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जो मिल जाए वो अच्छा है। और एचआर के जॉब कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके
इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मशीनरी टाटा मोटर्स में होती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी होती है, जमीन होती है, दुनिया जान के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जिस रिसोर्स पे कंपनी चलती है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। और उस ह्यूमन रिसोर्स का फ्यूचर कैसा होगा, आपको किस तरह के लोग आज से 5 साल बाद सिस्टम में चाहिए, क्या वो हैं, अगर नहीं है तो उनको कहाँ से लाना है, क्या अंदर के लोग डेवलप किए जा सकते हैं या बाहर से लाने पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने हायरिंग शुरू करी थी टाटा मोटर्स के लिए, उस टाइम पे मैं जो मैक्सिमम हायरिंग करता था वो होती थी मैकेनिकल इंजीनियर्स की, क्योंकि हम लोग गाड़ियां बनाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैकेनिकल इंजीनियर्स की। तो मैं सबसे ज्यादा हायरिंग करता था मैकेनिकल इंजीनियर्स की, और उसके बाद थोड़ी सी हायरिंग मेरी होती थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, क्योंकि प्लांट को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं उनकी जरूरत होती है। और थोड़े बहुत इंजीनियर्स हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहिए होते, थोड़े से, ज्यादा नहीं। लेकिन जब तक मैंने हायरिंग छोड़ी, इन 3-4 साल में एक चेंज ये आ चुका था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का नंबर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का नंबर ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ज्यादा हायर कर रहे थे और मैकेनिकल इंजीनियर्स कम हायर कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि 2013-14 और 2017-18 के बीच में गाड़ियों का इंडिया में जो इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो एक मेजर चेंज से अंडरगो हो गई, और गाड़ियां हमारी बहुत हद तक कंप्यूटराइज्ड हो गई, बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक हो गई। अब गाड़ियों को बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की ज्यादा जरूरत होने लगी। और सबसे बढ़िया तो कॉम्बिनेशन होता है, एक इंजीनियरिंग की फील्ड नई आई है जिसको बोलते हैं मैकाट्रॉनिक्स, विच इज हाफ मैकेनिकल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो तो बहुत ही आइडियल है, तो उनको हम लोग हायर करने लगे। तो ये कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी को जरूरत समझ में आई कि आज से 6 साल 8 साल बाद जो गाड़ियां बन रही होंगी वो तो पूरी कंप्यूटर बेस्ड होंगी। सो वी डोंट नीड मैकेनिकल इंजीनियर्स, वी नीड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स नाउ. So we had started building a pipeline of talent which was highly electronic or highly computer IT based. Similarly, in Hindustan Times, मैंने पिछले 2 साल में अपने सामने सामने ये चेंज होता हुआ देखा कि लोग हार्ड कॉपी अखबार से डिजिटल अखबार की तरफ शिफ्ट हो गए। और जो चेंज शायद 5 साल या 6 साल में आता, उसको कोरोना ने 7-8 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो एक जमाना वो आ गया था, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के पेरेंट्स ने, हम लोगों ने घर में पेपर मंगाने से हमको डर लगने लगा था कि पेपर आएगा, पेपर को पता नहीं किसने छुआ है तो वो कोरोना आ जाएगा, तो हम पेपर बंद कर दो। तो लोगों ने पेपर बंद कर दिए। अब जब पेपर बंद हो गया तो जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आता है, उन लोगों ने भी हमको रेवेन्यू देना बंद कर दिया कि भाई जब पेपर ही नहीं है तो हम क्यों दें। तो हमारे पास पैसा आना बंद हो गया। फिर हमको रियलाइज हुआ कि भाई हम डिजिटल पेपर लोगों को पढ़ाएंगे। सो डिजिटल पेपर जब हमने पढ़ाना शुरू किया, अब पता चला कि डिजिटल में जो एड छपता है उसकी जो रेवेन्यू होती है, उसका जो कैलकुलेशन होता है, वो प्रिंट की तरह होता ही नहीं है। प्रिंट में कॉपियां गिनी जाती हैं कि कितने कॉपीज बट रही हैं, यहाँ पर व्यूज गिने जाते हैं, लाइक्स गिने जाते हैं, यहाँ पर शेयर्स गिने जाते हैं कि कितनी बार आपकी न्यूज शेयर हो रही है, लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं। ये दुनिया ही अलग हो गई एकदम। अब हमारी मार्केटिंग टीम इस लैंग्वेज से वाकिफ ही नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि लाइक शेयर ये सब कैसे लाए जाते हैं। उसको बस यही पता था कि साहब हमारी 12,000 कॉपी है गोमती नगर में। अब 12,000 कॉपी और 1 मिलियन लाइक्स, ये उनको एक लैंग्वेज पता थी, दूसरी नहीं पता थी। तो अब हमको पता चला कि फ्यूचर के लिए जो वर्कफोर्स हमको चाहिए वो डिजिटल लैंग्वेज वाली चाहिए, और हमारे पास वो नहीं है। तो एचआर वो फील्ड है, एचआर वो ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है जो इस मैन पावर की फ्यूचर की नीड को फुलफिल करने के लिए आज से काम करेगा। इसके लिए वो 2 काम कर सकता है, या तो वो टाटा मोटर्स की तरह बाहर से नए बच्चे लाना शुरू करे, और या फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स की तरह बाहर से नए बच्चे भी लाए और अंदर जो लोग हैं उनको वो डिजिटल के लिए रेडी करे। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में टेक्नोलॉजी के चेंजेस आते रहेंगे, वैसे वैसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स के चेंजेस आते रहेंगे। और जब जब मैन पावर के रिक्वायरमेंट के चेंजेस आते रहेंगे, एचआर विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टाइम्स टू कम। हर इंडस्ट्री में आज की डेट में चेंज का रेट बहुत हाई हो चुका है।
इसलिए I think HR and careers in HR are going to stay for a very long time, and we are going to have a good time, all of us who are planning a career in HR over the next 10-20 years. So now over to Dr. Vibhuti. Whatever questions we have, we can start taking them, and then we'll talk. So that was very insightful, no doubt about it, and very in-depth, explanation of your journey, which I'm sure our students would have gained immensely from. Yeah. So now there are a few set of questions that Sure, we have, and then questions have already started popping in from the students as well. Okay. So first, I would put a few questions that are there. So the first one is, what are the most important skill sets required by a fresher to make a career in HR? Okay. So skill set for a career in HR are basically, I won't say, देखिए, for a fresher I will say कि ऐसा कोई खास skill set मैं नहीं बोलूंगा कि आप see, you would have expected कि मैं कहूँ कि you should have a good connect with people, और ऐसा कुछ नहीं है. बहुत से लोग जो they are not able to connect with people, they also build great careers in HR. तो HR का मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, why do you want to join HR? The most common answer is I love talking to people. So as if जो लोग marketing और sales में जाते हैं, they love talking to monkeys or they love talking to animals. ऐसा थोड़ी है यार. Everyone loves talking to people. So just because you love interacting with people does not mean that you are meant for HR. So what skills are required for freshers in HR? I would say that for future, the way we are moving, I would say analytics is one of the skills which I would see in a fresher rather than his good interpersonal skills or his good communication skills. क्योंकि good interpersonal skills और good communication skills के लिए तो मैं हूँ. मुझे अब चाहिए अपने फ्रेशर में वो क्वालिटी जो मैं नहीं कर सकता हूं, एंड दैट इज एनालिटिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डेटा क्रंचिंग, दैट इज नंबर क्रंचिंग. So that is something which is going to play a very important role in HR in times to come. चाहे engagement हो, hiring हो, training हो, everything is about numbers and data now. So we want to see trends, we want to see projections, we want to see cost, we want to see results, and everything is data crunching. So one of the most important skill sets which would matter for a fresher is analytics. Absolutely. HR can no longer shy away from numbers. Bilkul. As in the past. Absolutely right. All right. So the next question is, what is the most attractive thing about a career in HR? I told you the most attractive thing about the career in HR is the sheer variety of things which you do, especially if you are in generalist HR. Specialist HR में अगर आप चले गए तब फिर भी आप या तो सिर्फ ट्रेनिंग करते रहेंगे या सिर्फ हायरिंग करते रहेंगे. लेकिन अगर आप जनरलिस्ट HR में आ गए तो रोज क्या हर घंटा एक नया चैलेंज लेकर आएगा. कभी आप कोर्ट में केस लड़ रहे होगे, कभी आप किसी को नौकरी दे रहे होगे, कभी आप किसी को नौकरी से हटा रहे होगे, कभी आप किसी का डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे होगे, कभी आप अपने कुछ कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे होगे. तो द वैरायटी ऑफ जॉब इज सो ह्यूज इन HR कि उसमें आई थिंक दैट्स द मोस्ट attractive for me. That's the most attractive thing about HR. All right, thanks. So the next question is, are there some certifications that can be considered by the students? Yes, there are a lot of certifications. If they want to enter into HR. Yes, there are a lot of certifications, but आप लोग अभी करियर की जिस स्टेज पे हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि अभी उतनी जल्दी आप लोग सर्टिफिकेशंस की तरफ मत भागिए. ये सर्टिफिकेशंस कैंपस से निकलने के 7 साल के बाद आप लोग सोचना शुरू कीजिएगा. 5 से 7 साल के बाद जब आपको ये पता चल जाए कि आप जनरलिस्ट साइड पे जा रहे हैं या आप स्पेशलिस्ट साइड पे जा रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन आप किस साइड पे जा रहे हैं उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस ढूंढ के उस टाइम पे आप करें. अभी के लिए मैं पिछले साल भी मैंने ये बात रिकमेंड की थी और इस साल भी मैं यही रिकमेंड कर रहा हूं, अगर हो सके तो आप डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल शीट्स, SPSS, टैब्ल्यू, इन सब के कोर्सेज अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए.
Again, data. So that's very, very important. There's no doubt about it. Yeah. Okay. So next question is, what about stability and career progression in the field of HR? Yeah, Like, I guess you've very nicely explained your own career, so it's suffices, but still some yeah. input from So your end. the point behind explaining my own journey was that you could get a glimpse of how during the span of 12 years a career moves. And I may be just one case. There would be people who move and who grow much faster in the same 12 years. There would also be people who grow slower in the 12 years. So don't take this as a benchmark. This was just to give you an idea of how my journey has been. But yes, try and see that the quality of work which you are doing, that should keep improving and that should keep growing with every passing year. Every passing year, you should be doing slightly more complex work than last time. And if the company is not able to give you complex work, then you should try and make and find something more complex about it. As I told you कि मैंने recruitment में कुछ research work शुरू किया. So something like which makes that job a little more academic or little more research based, वैसा scope हमेशा हम सबके पास होता है. तो वो आप कर सकते हैं. Absolutely. All right. So there is one question pertaining to COVID, because that is a pandemic period and students are literally facing it. So what are the projections for careers in HR post COVID 2021 and beyond? Okay. So post COVID HR jobs में मुझे एक projection ये दिखाई दे रहा है कि HR का वो part जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो, चाहे वो लेट्स से कि जो आपका कंपनी का पूरा डेटाबेस है, MIS है, उसकी टेक्नोलॉजी हो, हम लोग पीपल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी हो, ये सारी जो भी चीजें टेक्नोलॉजी बेस्ड HR की हैं. मतलब मैं क्लासिकल रिक्रूटमेंट और क्लासिकल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं. मैं ये बोल रहा हूं कि HR का वो पार्ट जो IT पे राइड होकर आता है. आई थिंक वो करियर्स HR में अब बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो, क्योंकि रिमोट वर्किंग इज गोइंग टू बी अ बिग रियलिटी इन द टाइम्स टू कम, और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी बेस्ड HR इज गोइंग टू प्ले अ वेरी interesting and a very important role. Right. Also, we are again feeling the heat of lockdown kind of thing. Yes. With the spiraling of cases, absolutely right. Also, I have one positive news here. A lot of organizations have realized that they don't need offices and work is still going on from home. So it may be possible that a lot of companies which were earlier based in Bangalore and Gurgaon and maybe New York, and you would have had to go to Gurgaon to do a job there, those jobs may start to be available to people sitting in Lucknow from the comfort of their homes. May. It has not started yet, but yeah, it may. Because the other day I was reading a report in which it was saying they have started feeling, why do we build that much of infrastructure and spend so much when the work can flawlessly and smoothly go from home? So what's the need? So what they are doing, they are subletting their places to these people, property dealers, and also that they can build up something new and they can let go with the infra. Exactly. And let people work from their homes and use their own internet connections and all those things. So it's a huge saving. Yes, but the thing is that the company's leadership and the management has to be very open and very flexible to take such decisions. A lot of companies, management को तब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक वो सामने अपने एम्प्लॉय को बैठे देख नहीं लेंगे. तो बहुत सी जगहों पर वो नहीं होने वाला है. लेकिन जो younger companies हैं, जो dynamic companies हैं, startups, those have different orientation altogether. They have already started doing it. They have started taking the risk. In a Bharat Petroleum or in a Tata Motors, ये होने में बहुत वक्त लगेगा. हिंदुस्तान टाइम्स में ये बीच में हो जाएगा. फेसबुक और गूगल में ऑलरेडी हो चुका है. So that is the
that is the spectrum. That's right. All right. Now I switch to, there are a few other questions, but I directly switch to the students' question. There are a lot many. So the Okay. first one is from Ayushi Avasti. My question to you, sir. What are the best organizations to work for as an HR professional? ओके एक डॉक्टर ने मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा कि विच इज द बेस्ट वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो उन्होंने बताया द बेस्ट वैक्सीन इज द वन विच इज अवेलेबल. सो आई हैव द सेम आंसर टू यू. द बेस्ट जॉब इज द वन विच इज अवेलेबल. सी right now the situation where we all are, let me put it a little bluntly, beggars cannot be choosers. So as freshers we do not have hundreds of opportunities waiting for us. ठीक है? So let's be practical. अपॉर्चुनिटी पहली जो भी हो वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी है, उसके बाद वहां से रास्ते अपने आप खुलते हैं. But in case you really want to know which are the companies which are very good for careers in HR, generally it has been seen, the trend says that a lot of FMCG companies are specifically famous for their HR practices and their HR growth policies, starting with companies like HUL and PNG, followed by companies like Marico and Nestle, and then Coke and Pepsi. These are companies which are ITC is another example. So these are companies which are excellent, which have excellent HR work. Then there is another personal favorite of mine, which is Asian Paints, which does a lot of good work in HR. Why I know that? Because TIS में हम लोगों के आधे से ज़्यादा professors Asian Paints की visiting faculty होते थे. So they do a lot of good work in HR at Asian Paints. So these are some companies which are coming to my mind. But any company is good company. Every company has its own मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम जब मैं बताता हूं कि मैंने वो छोड़ी हैं, तो लोग कहते हैं अरे आपने भारत पेट्रोलियम छोड़ दिया. अरे मैं 8 साल में टाटा मोटर्स में रहा, एवरीवन वाज टेलिंग मी अरे आप बीपीसीएल छोड़ के टाटा में आ गए. अब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में हूं, एवरीवन टेल्स मी अरे आप टाटा छोड़ के हिंदुस्तान टाइम्स में आ गए. सो हर कंपनी अच्छी होती, हो सकता है मैं हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ के कल को राकेश मसाले में चला जाऊं या घड़ी डिटर्जेंट में चला जाऊं. तो depending on कि मैं वहां क्या काम कर रहा हूं, that is more important rather than the brand of the company. Absolutely, and that could have been the best piece of advice कि अभी जो मिल रहा है just grab the opportunity. No, it's a completely honest and a very practical advice. Absolutely, and the more blunt you put it, I guess the better we understand. So absolutely matches my mental wavelength. Okay, so the next question, I guess partly you answered, but still I'll put the question. So this is from Heba Sania. Good afternoon, sir. How can we decide that this is the one where I should apply for job? Okay, so the language of the question sounds very filmy. Okay, how do I know this is the one? This is the one, yeah. ऐसा कुछ नहीं है. Nothing is the one. As I told you, any opportunity where you think the role is good. So first ask the company what is the role. If you think the role is good enough, so any company wherever you are getting an opportunity is a good company to start off. I would again reiterate, just go for the best job which you are getting, not the best company which you are getting right now. The next question is from Prasha Verma. Good afternoon, sir. My question is it a myth that career progression in HR is slow? Yes, it is a myth. It is a myth because see, the number of vacancies and the number of promotions in marketing sales are very high, and the number of vacancies and the number of promotions in HR are very low. But the number of people in marketing and sales is very high, and the number of people in HR is very low. So it is all proportionate. The world is fair. एक बार आप दुनिया में आइए बाहर, corporate world में, it is everything is fair. ऐसा नहीं है, because हम लोगों के जो marketing के counterparts हैं, IIM के pass outs या Symbiosis, नार्सी मुंजी, XLRI के pass outs, वो भी आज वहीं उतने ही प्रोग्रेस किया है उन्होंने भी जितना कि HR वालों ने प्रोग्रेस किया है 12 साल में. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग मतलब CEO बन गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं. So it is same.
The next question is from Apurva Singh. So, good afternoon, sir. I would like to know what soft skills should someone have in the field of HR? Okay. I think one of the soft skills which I have really benefited and gained from is empathy. So whether you are asking someone to leave your company, or you are taking someone in the new job, or you are trying to tell someone कि आपका performance बहुत खराब रहा है, one thing which was very important in HR is to be able to understand the person in front of you and his or her position in life, or his or her situation in life. तो वो 56 years का आदमी अभी जाकर उसकी अच्छी खासी बड़ी बेटी होगी शायद 12th में या ग्रेजुएशन में, उसको उसकी वाइफ को जाके अभी उसको बताना है थोड़ी देर बाद कि मेरा जॉब चला गया है और कल से नौकरी नहीं है, अगले महीने की सैलरी नहीं आएगी. सो इट इज फॉर यू, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब कि मेरे को तो बॉस ने बोला है बोलना है. But if there is no empathy in your communication, then this communication will become very tragic for the person who is sitting in front. ये है ही ट्रैजिक, इसमें इसको कम ट्रैजिक बनाने का कोई तरीका नहीं है, बट एम्पैथी से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, और वो एम्पैथी होना एचआर में बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक I connect with people on a very personal level, whether it is a reporter in my company, or whether it is a business head in my company, or it is a security guard in my company. So I have a very personal connect with most people. And I think this is something which helps me getting people's respect and trust. So if you can have that kind of an open and a genuine attitude towards people, it is going to be helpful. All right, that's the perfect one, I guess one can have. All right, the next question is from the director itself, Dr. Naila. Mr. Usmani, given the current job scenario, particularly in HR, what is your advice to freshers facing a dearth of job opportunities in HR? Okay, so first of all, good afternoon, Dr. Naila, and a formal hello to you. See, those who are looking for jobs in HR, there would be two kind of people. There are people who want a job, and there are people who want a job in HR only. Okay, so if you are one of those who needs a job in HR only, तो फिर no doubt कि your patience has to be at its peak right now, because HR की jobs रोज रोज निकलती नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, और कम होती हैं. हालांकि उनके कंटेंडर्स भी कम होते हैं, बट फिर भी जॉब्स तो कम होती ही हैं. और अगर HR में वैकेंसी आ भी जाती है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो फिल हो. उसके बगैर भी कंपनीज कभी कभी काम कर लेती हैं कि दूसरे लोकेशन के एचआर को बोल दिया कुछ दिन तुम दोनों संभाल लो, इस टाइप की बात हो जाती है कभी कभी. लेकिन अगर सेल्स और मार्केटिंग की ओपनिंग आती है तो कंपनीज को पता है कि अगर आज लखनऊ में सेल्स ऑफिसर गया है तो कल से लखनऊ में पैसा आना बंद, तो इसलिए वहां पर कल ही मुझे एक आदमी चाहिए. सो that is the difference between HR and marketing jobs. So if you are looking for just a job, then I don't think that you should wait for an HR job. Whichever job is coming your way, first take up that job. You always have option to switch. जितने टाइम गुजरता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा मार्केटिंग से एचआर में या किसी और फील्ड में जाना, लेकिन बंद नहीं होता है, पॉसिबल हमेशा रहता है, इवन एट द लास्ट मोमेंट. सो बीपीसीएल में जो मेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर थी, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर बनने से पहले सिर्फ फाइनेंस का काम किया था और सीधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर बन गई. सो वो उस लेवल पे भी मूवमेंट हो सकता है, नीचे तो हो ही सकता है, ऊपर भी मूवमेंट हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो जाते हैं फ्यूचर में वापस एचआर में आने के. तो अगर आपको अभी एचआर का जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको जो जॉब मिल रहा है फिलहाल तो आप वो लें, क्योंकि देखिए एचआर के जॉब के वेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1.5 साल हो चुका है पास आउट हो और आप अभी तक बगैर जॉब के बैठे हुए. So the earlier you get placed, the earlier you have a job, it is better for you. So if you think that HR jobs are less right now, go for any jobs which are coming your way. Later on,
keep trying, and you will get a chance to come back into HR. Or I can safely say after 12 years that for every situation, there are solutions which come on their own. So you just have to wait and be a little patient. रास्ते अपने आप निकल आते हैं. तो HR में आप कब आएंगे और कैसे आएंगे, मैं कोई उसका फॉर्मूला नहीं बता सकता हूँ. बस इतना बता सकता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा और आप आ जाएंगे. So just wait for that day, and in that meantime, if you have any job which is coming your way, do take it. Great. The next question is from Deepika. So it's how careers in HR are different from others, like in marketing and finance. Okay, so marketing के फंक्शन में और फाइनेंस के फंक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोज एक ही काम करना होता है. वही साबुन है, वही उसकी क्वालिटीज हैं, लेके गए साहब इस साबुन में अच्छी खुशबू है, इसके दाम कम है, ये है वो है, जाके बेच दिया. फाइनेंस में वही काम करना होता है, वही बैलेंस शीट, वही नंबर्स. इस बार 2000 करोड़ का प्रॉफिट तो अगले साल 1900 करोड़ का प्रॉफिट, बस इतना ही फर्क होता है. HR में रोज नया काम होता है. आज सुधांशु जी का प्रमोशन होना है कि नहीं होना है, आप ये डिसाइड कर रहे हो. शाम को आप ये डिसाइड कर रहे हो कि स्वाति को हायर करना है कि रश्मि को हायर करना है. अगले दिन सुबह आप ये डिसाइड कर रहे हो कि इस साल हम वेरिएबल बोनस कितना देंगे. सो द वर्क कीप्स चेंजिंग एवरी डे इन HR. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एनी अदर फंक्शन एंड HR. So there are two questions related to COVID. So I'll read one, and the other one is covered in that only. So that is from Rudransh. AI simulation-based training and being hit by the pandemic. Can't we say that the major HR functions would be performed by AI, supervised by engineers, and will eat up the jobs of management graduates? Yes, you are absolutely right. Not most of them, but many of our jobs will be robotized and will be automated in times to come. मैं जो रिसर्च कर रहा था रिक्रूटमेंट में, उसमें पता चला कि गूगल ने एक सॉफ्टवेयर, गूगल ने नहीं, गूगल के 2 इंजीनियर्स ने अपने आप एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो किसी भी इंटरव्यू के वीडियो को म्यूट पे देखकर सिर्फ कैंडिडेट के फेशियल एक्सप्रेशन से ये प्रिडिक्ट कर देता है कि इसका सिलेक्शन हुआ था कि इसका रिजेक्शन हुआ था. और वो 99% एक्यूरेसी के साथ करता है. यानी कि आपको सुनने तक की जरूरत नहीं है, आप वो डेटा वीडियो डाल दीजिए और वो गूगल बता देगा कि इसको सेलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. तो हायरिंग जैसे डिसीजन जो कि बहुत ज्यादा मैनुअल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ह्यूमन हुआ करते थे, वहां तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है. और अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आ जाएगी. लेकिन 2 बातें यहाँ पर है. पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे मैनेजर्स जो होते हैं, मैं बिजनेस मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, सेल्स के मैनेजर्स, फाइनेंस के मैनेजर्स, मार्केटिंग के मैनेजर्स, प्रोडक्शन के मैनेजर्स, वी आर अ कंट्री ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड. एंड दैट इज समथिंग विच इज अ गुड न्यूज फॉर HR. जब तक इतने घटिया मैनेजर्स कंट्री में हैं, तब तक HR की जरूरत रहेगी. So it may sound like a joke, but actually it is reality. We are a country of very immature managers. We don't know how to give feedbacks. We don't know whom to promote. We are very partial. We don't know how to segregate good performance from bad performance. Humko, as managers, we are pathetic people. So that is where HR की हैंड होल्डिंग विल कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया. ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ, ये किताबों से बिल्कुल अलग होगी. किताबें कह रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वो, बट मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारी जनता का लेवल वो नहीं है कि यहाँ पर रोबोट्स आ सकें. अभी वो गाली गलौच होती है तो कौन रोकेगा उनको. दूसरी बात, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को बताने के लिए कोई तो HR मैनेजर होगा जो उसमें ये डेटा फीड करेगा कि तुमको क्या ट्रेनिंग देनी है और कैसे देनी है और कब देनी है. सो वो जॉब्स बची रहेंगी, बट वो जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी. और उसके लिए सिर्फ MBA शायद काम ना आए, उसके लिए हमको डीपर लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी. मे बी साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा या सोशियोलॉजी में जाना पड़ेगा या टीचिंग मेथोडोलॉजीज की फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी. वो स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, तब हम उस सॉफ्टवेयर को बनवा पाएंगे. किसी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ही से पूछेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बट उसके लिए सिर्फ एमबीए से काम नहीं चलेगा, फिर उसके लिए आपके पास साइकोलॉजी का या कुछ इस तरह का स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड होना चाहिए। So then there are lots of thanks popping in for you. Thank you very much. Students have written a lot many thanks to you, including that of the director. So I'll read Thank the you, last Naila. one from Dr. Naila, of course. Thank you so much, Mr. Usmani. This was exactly the kind of honest and brilliant answer that I expected from you. Thanks again. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, all right. Thank you so much. And I am available on LinkedIn and Facebook. Whenever any one of you wants to reach out to me for any more questions, do reach out to me. And anytime Dr. Naila and Dr. Vibhuti or Dr. Neha want, I can come back again and have another session with all of you. All right. So thank you very much for your time. I hope you got Thank you so very much for the very, very insightful session. And I, on behalf of the Director, Dean, Faculty, Staff, and students of IILM Lucknow, thank you so much and for sparing your valuable time. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Thank you, Dr. Vibhuti.